This is question from October 2022. Question number 2. A uniform rod AB of length 2A and mass M, capital M. The rod is held in equilibrium in the horizontal position by two vertical light strings which are attached to the rod at C and D. AC length is 2 over 5A, DB length is 3 over 5A as in the figure. A particle is placed A particle P is placed on the rod at B. The rod remains horizontal and in equilibrium. Find in terms of M the largest possible mass of the particle P. So इसके लिए you'll have to for the largest possible. So the particle mass is attached at point B is placed here, and let the weight for this is mg. The rod has the mass m, so mg newtons is the weight of the rod, and let the largest possible mass of the object is, which is placed at point B, is, ठीक हो गया? So let the largest mass of P is m kg. So you'll need to understand that for the largest mass, you'll have to assume that the tension in the wire in the spring which is at C is 0. If it is TC newtons, and here if the tension is TT newtons, so for the largest possible mass of the particle, you need to assume that the tension, in the spring at C is 0. तो इसलिए होगा क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल, इस पे थोड़ा सा वेट भी लटकाया जा सकता है. जैसे जैसे बी के ऊपर वेट बढ़ेगा तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें स्लैक आना शुरू हो जाएगा, और हम उस पॉइंट पे देखे जा रहे हैं जहां पर बिल्कुल इसमें स्लैक आना शुरू हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए, इसमें ढीलापन आ जाए. सो वी नीड टू assume for the largest possible mass of the particle P, which is at P, for the largest mass, so you need to assume that the tension in the string at C is 0 newtons. This is the main point. Next, if this point is clear, the rest of the working is very, very, very simple. The total length of the rod is 2A. The total is 2A. Halfway is A. So this length is then 3A over 5. 3A over 5. This is basically A minus 2A over 5. 3 over 5 is here. So subtract this from A because the length from this end to this center of gravity. So on the right side is A. So A minus 3A over 5 is 2A upon 5. So this is the important key point, like you need to assume that the tension in the wire at C is 0. Next, as equilibrium, so taking moments. Take moments about point D. If you take moments about point D,
So the tension in the string at C is 0, and the other string which is at D is passing through point D. So the only two forces we need to involve in this moment is mg and small mg. So taking moments about D, so clockwise. So clockwise is this is clockwise. Mg, the distance from this force from D is 3a upon 5, and this is the only force in the clockwise, and the other for the other thing it is anti-clockwise. ये वाला इस तरीके से हो जाएगा. So is equal to mg, and the distance of mg from this capital Mg from D is 2a upon 5. So on the two sides you can cancel. A goes with this A. 5 is the denominator. G is common. So the answer is 3m is equals to 2m. And the question was to write small m. M is equals to 2m over 3. So 2m over 3 is the mass of the particle at the greatest mass of the particle at B. तो इस तरीके से पहला पार्ट सॉल्व हो गया. तो इसमें ये करना था कि P पर हमने एक ऐसा एक m के जी का लेट हमने कर लिया कि लेट m के जी इस पे है. उसको मैक्सिमम करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है कि ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि उसमें मैक्सिमम उस पर वेट अगर हम बढ़ाते तो इवेंचुअली थोड़ा सा इस तरफ को ये इसका प्रेशर पड़ेगा, तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग सी के ऊपर है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी. तो ये वो लार्जेस्ट के लिए आपने टी सी जो है वो 0 न्यूटन सपोज इसमें इसमें ज्यूम करना है, इसमें लेट करना है, और उसके बाद फिर मोमेंट्स लेके क्लॉकवाइज दो मोमेंट्स अबाउट डी लिया. तो स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी दो फोर्सेस हैं. कैपिटल एम जी जो उस पूरे रॉड का वेट है, एम जी जो हमारे पास पार्टिकल पी है. तो क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम, और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारे पास सॉल्व हो गया. अब जो इसका अगला पार्ट है, गिवन दैट द मास ऑफ पी given that the mass of P is 1 over 2m, find in terms of m and small g, capital and small g, the tension in the string that is attached to the rod at C. अब इसके लिए ये आपने देख लिया होगा, मैं इस फिगर को अरेज कर रहा हूँ. ये पहला पार्ट आपके पास आ गया, वीडियो बन रही है तो जहरी बात है इसको आप देख सकते हो बार बार. अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर इस जगह पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और ये अब टेंशन यहाँ पर हमारे पास हम लिखेंगे, बाकी सब चीज़ें इस तरीके से, इसको मैंने हटा दिया, ये पिछले पार्ट के लिए था. अब उसने कहा जो हमने एक जो पी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो मास है वो हमारे पास हाफ एम है. इसका मतलब है कि इस जगह पर हाफ एम का मतलब कि हाफ एम वेट, वेट के लिए पता है डब्ल्यू एम जी. ये बेसिक बातें जो कि दिमाग में होंगी, और बाकी सब वही है उसी हिसाब से. बड़ा स्मॉल कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी इज द वेट ऑफ द रॉड. पहले पार्ट की वर्किंग आई एम गोइंग टू अरेज, और अब इसमें इसी जगह पर मैं सेकंड पार्ट को लेके आ रहा हूँ, और सेकंड पार्ट इज वेरी सिंपल. अब उसने बोला मैं कि फाइंड, इसको अरेज कर दिया. अब उसने बोला है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ एम एन जी द टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज अटैच्ड एट सी. अब दैट इज अटैच्ड एट सी, सी के ऊपर जो है वो हमने ये निकाला. अब इसके लिए बेस्ट यही है, बाकी सब डिस्टेंसेस मैंने मेंशन किए हुए. 3a/5 बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे, 2a/5, 3 ओवर, ये सब बाकी तो हमारे पास सब लेंथ वही है. क्वेश्चन मार्क वो आ गया.
तो इसके लिए फिर हम मोमेंट ले लेते हैं अब, क्योंकि अब डी की कोई इसमें जिक्र नहीं कर रहा। तो लेट अस टेक द मोमेंट अबाउट, मैं यहाँ लिखता हूँ मोमेंट अबाउट पॉइंट डी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मोमेंट हमने डी पे लिया अगर, तो अब देखो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस क्लॉकवाइज, कौन कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। हम पहले क्लॉकवाइज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर हम डी के अबाउट ले रहे हैं, तो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। अबाउट बात हो रही है अबाउट टी। तो पहले हम लिखते हैं टी सी। अगर हम टी सी करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम डी, वही बात है फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट मोमेंट आ रहा है, तो दैट इज 1। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है दैट इज ए। ठीक हो गया ना। तो टी सी इंटू ए, टी सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस क्लॉकवाइज वो वाली फोर्स भी थी, वो हाफ एम जी, हाफ एम जी। और इसका डिस्टेंस तो नजर आ रहा है 3a/5। तो प्लस हाफ एम जी, और ये आ जाएगा 3a/5। और ये हमारे पास क्लॉकवाइज थे, और एंटी क्लॉकवाइज जो आ गया दैट इज एम जी। और एम जी इंटू इसका डिस्टेंस 2a/5 इक्वल्स टू एम जी और 2a/5। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन देख लो कि कुछ कॉमन है, उसको यहीं पे हम शॉर्टकट में कैंसिल करते हैं। लाइक ए कैंसिल्स ए। तो हमने तो टी सी निकालना था, तो टी सी प्लस 3/10 एम जी इज इक्वल्स टू 2/5 एम जी। टी इज इक्वल्स टू टेंशन स्ट्रिंग 2/5 एम जी माइनस 3/10 एम जी। और ये सिंप्लीफाई होके टी सी इज इक्वल्स टू 1/10 एम जी। ये हमारे पास आ गया इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग एम जी। तो इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। थैंक यू।